Linear equation of two variable is the meaning of two variables. The general equation of ax plus by plus c is equal to b 0. It is the general equation of linear equation of two variable. General equation. Then two variables. First is this one, and second is this one. Two variables. These are ये दो वेरिएबल हैं x और y, और उसका ये जनरल इक्वेशन है। तो किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का उसमें दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है इक्वल टू का वन साइड और दूसरा पार्ट होता है इक्वल टू का अदर साइड। जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं LHS, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, and other one is called RHS, right hand side. Other one is called the right hand side. As for example, two x minus 3y equal to be 7. Then 2x minus 3y is in the side of LHS and 7 is in the side of RHS. Now you just know about the linear equation. How many type of linear equation? Linear equation is so many type. Then classification of linear equation. First one is with one variable with two variable. Linear equation of with one variable general form is ax plus b is equal to b 0. वन वेरिएबल का जनरल इक्वेशन ये होता है और टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू बी 0। दूसरे का ये होता है फॉर वन वेरिएबल
one variable and this is 4 two वेरिएबल। ये वन वेरिएबल के लिए है और ये टू वेरिएबल के लिए है। अब हम लोग हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर equation. Solution of linear equation. How to solve the linear equation? General equation is ax plus by plus c is equal to b 0. This is the general equation. Then हम लोग क्या करते हैं कि जनरल इक्वेशन में जो दो वेरिएबल दिए हुए हैं उसमें से एक वेरिएबल को LHS में रखते हैं और दूसरे वेरिएबल को RHS में रखते हैं। दैट मीन्स वी कैन सिंप्लीफाई बाय ax इज इक्वल टू b माइनस by माइनस c। देयरफॉर ax इज इक्वल टू b माइनस by प्लस c इज इक्वल टू b अपॉन a। Example, if you take 3x minus 2y plus 1 is equal to be 0. This is the linear equation. Then we can write 3x is equal to be 2y minus 1. Therefore x is equal to be 2y minus 1 divided by 3. Then make a table of solution or we can also be write simply without table. Here you put x and here you put y. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. If you put x is equal to be 0, then y is equal to be 2. If you put x is equal to be 1, then y is equal to be if x is equal to be 0, then y is equal to be 1 divided by 2. If x is equal to be 1,
then y is equal to be 2. If x is equal to be 2, then y is equal to be 7 divided by 2. If x is equal to be 3, then y is equal to be 5. If x is equal to be -1, then y is equal to be -1. These are the value, and this value you just put in the table. If x is equal to be 0, then y is equal to be 1 by 2. If x is equal to be 1, then y is equal to be 2. If x is equal to be 2, then y is equal to be 7 by 2. If x is equal to be 3, then y is equal to be 5. If x is equal to be minus y, then y is equal to be minus y. These are the solution of given equation. These are the solution for one linear equation. If you have two linear equation, if we have two linear equation with two variable, then we get one solution or infinite solution or no solution. Thank you.